अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सर अलीम, हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। एंड दिस इज द सेकंड प्रोग्राम ऑफ द सेम सीरीज। सर जफर इज आल्सो प्रेजेंट हियर। बहुत सारे सवालात हैं जिसमें एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, वो ये है कि व्हाट वन लूजेस विद द लैक ऑफ इंग्लिश एबिलिटी। स्टूडेंट्स में तमाम सलाहियत होती है, लेकिन उन तमाम सलाहियतों के पीछे वो समझता है कि एक ऐसा टूल मेरे पास है जिसको मैं इस्तेमाल करूँगा तो सक्सेस मुझे मिल जाएगी। उसमें एक जो सबसे बड़ा टूल, बीइंग एजुकेटेड पर्सन और बीइंग एजुकेशनिस्ट और बीइंग स्टूडेंट, वो है इंग्लिश लैंग्वेज। क्या ये इतना ही ज़रूरी है जितना कि हम समझते हैं कि अगर तालीम इसके बग़ैर हासिल हुई तो फिर हम मुकम्मल नहीं कर सकेंगे, जबकि हम दूसरे ममालिक का जायज़ा लें जिन्होंने अपने नेशनल लैंग्वेज में तालीम को हासिल किया और उन्होंने दुनिया में तरक्की की, लेकिन ऐसा पाकिस्तान में क्यों नहीं। मेरा क्वेश्चन, व्हाट वन लूजेस विद द लैक ऑफ इंग्लिश एबिलिटी। सर ये वो सवाल है जो कि हर आदमी इसका पूछना चाहता है, इसका जवाब हासिल करना चाहता है। तो व्हाट्स योर आंसर अबाउट दिस क्वेश्चन? Well, I respond to your actual question after a short while. First, I'd like to tell you I am a staunch supporter that the medium of education must be in national language. Good. There's no question about it. As you know, there are many countries of the world which have progressed by leaps and bounds. They have even discovered the secrets of atom and other planets Yes. by means of their own languages, such as Russia, Japan, China, France, Italy, Holland, and so on and so forth. Okay. But unfortunately, the dynamics of subcontinent differ from others. What is the reason? This is why, we have to learn English for our education as well as for a better career. Now, I get down to your query, what you put up to me a short while back. There is no denying of the fact that we have got to lose so many opportunities in our lives, mainly due to, with the lack of English ability. Although many of our people are well versed in their own respective fields. Let me tell you a few facts of our society. Many of our graduates with good GPA miserably fail to seek admission in foreign universities just because of deficiency of English. And then they are not able to translate their objectives into reality. And later on, it turns out to be a perpetual regret for them. And I have seen many professionals who are pretty good at their own fields, but their promotions are withheld because they cannot speak English. They cannot express themselves in English. Therefore, they not only deprive of themselves but also their immediate family with the perks and privileges what they could enjoy with if they had learned English earlier. And the biggest disadvantage of not learning English is to deprive of English literature. Let me surprise you. 3/4 of world literature is in English. What we cannot get in our own local literature, the same we easily find in English, even with more detail and research. Isn't it incredible? Yes, of course. And I come down to the conclusion that information technology, parallel with English language, have become the most powerful tools of the world.
if you grasp them, I bet you will go unstoppable. And then you will not need job will need you. That's great. Job will need you. But what's the reason that the people want to learn English in our country? Actually, this is the same attraction. They want to be successful in their lives, and when they see people, they also want to impress others, with their own linguistic ability. Clear. It is said that the people, those are speaking English, we always, as we discussed in the very first video, that कि जो लोग इंग्लिश बोलते हैं तो हम कहते हैं कि ये एजुकेटेड है और ये तजर्बा भी है, एक्सपेरिमेंट भी हो चुका है, प्रैक्टिकल है कि जब भी आप किसी ऑफिस में या कहीं पर भी जाएं और अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो यकीन करें आपकी रिस्पेक्ट कुछ और होती है। लेकिन ऐसा क्या ये हमारे कॉम्प्लेक्स है, इन्फीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स है कि हम इंग्लिश बोलेंगे तो ही हमें इज्जत मिलेगी या हमारी तरक्की होगी? उसका रीज़न क्या है सर? I've already answered you, when you put up the first question, that this is a compulsion here in Southeast Asia. So without English, we stand nowhere. Or even if we find a particular skills, so actually we stop, at particular point, and we do not jack up ourselves, from that point, because English has become a barrier. मेरा एक सवाल सर से यही होगा कि जो क्या हम इसको ये कह सकते हैं कि हम अपनी ज़बान पर इतना फ़ख्र नहीं है या हमारी ज़बान एक बैरियर है आला तालीम हासिल करने के लिए? लेकिन वो ममालिक जहाँ पर इंग्लिश बोली ही नहीं जाती तो फिर उन्होंने किस तरीके से तरक्की कर ली, उन्होंने क्या तरीक़ा अपनाया? Well, the countries which have developed a great deal by means of their own languages, they did not compromise on their national language right from the word go. They did find it difficult. For example, Japan, after America dropped atom bomb on Japan, actually completely destroyed. Yes. But actually what they decided that we would progress in our own language no matter what. ये बिल्कुल सही है कि हम अपनी ज़ुबान में अपने नेशनल लैंग्वेज में तरक्की कर सकते हैं अगर उसमें आला तालीम हासिल करें। एक एग्जांपल ये है कि चाइना ने ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया है उसको ट्रांसलेट किया अपनी चाइनीज़ लैंग्वेज में और तमाम स्टूडेंट्स को 5000 जस्ट लाइक फ्री दे दी कि 5000 रुपीज़ पे करें और ये ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया आपको दे दी जाएगी। लेकिन विद दिस कंडीशन कि ये किसी को पास ऑन नहीं की जाएगी या ये किसी दूसरे यानी गैर मुवालिब के कोई भी लोग यहाँ पर पढ़ते हैं उनको आप नहीं देंगे और अगर दे दी तो ये आपसे भी वापस ले ली जाएगी। इससे ये हमें सबक मिलता है कि स्टूडेंट्स को सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट की भी ज़रूरत है। गवर्नमेंट इस सिलसिले में क्या कर रही है? ये एक बहुत आसान छोटा सा सवाल लेकिन इसका जवाब बहुत मीनिंगफुल होगा और बहुत ज़्यादा एम्फेटिक होगा। Well, since the death of Maulvi Abdul Haq, Yes. our Urdu unfortunately hasn't progressed as it should be. Yes, we could. And Urdu is a kind of a language which has a lot of capacity to develop, but there must be people at the back of it who would push it forward to success. इट इज सेड कि अगर इंग्लिश सीखनी है या इंग्लिश बोलना है तो आपको टेंसेस सीखना होंगे। देयर आर 3 टेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर एंड एवरी टेंस हैज 4 ब्रांचेस। नाउ 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12। इफ अ पर्सन हैज कमांड ऑन 12 टेंसेस तो डैम श्योर द पर्सन विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। तो नाउ व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ टेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर? Well, my answer is a big no.
learning tenses is not at all enough, as there are many important uses of grammar other than tenses, such as, voices, transitive verbs and intransitive verbs, gerund, modal verbs, conditional, of course, Yes. Conditional types, structure, narration types, question tag, and then there comes composition or sentence making. And let me tell you something interesting yet regrettable. We learn tenses from primary level to intermediate level. However, we do not know how to use tenses and voices accurately. Yes. There are people, especially our graduates and undergraduates, they make a mess of tenses, although they would have learned, such tenses, actually for almost 12 years. दिस इज़ ट्रू दैट अगर आप देखें कि जो दुनिया की सबसे मुश्किल तरीन ज़बान है वो है चाइनीज़। अगर चाइनीज़ लैंग्वेज को आप सीखना चाहें तो आप साल और 2 साल के अंदर इस तरीके से या इस तरह से सीख लेंगे कि जैसे कि चाइनीज़ ही हैं आप, या आप चाइना में ही पैदा हुए हैं और आपको चाइनीज़ उसी रवानी के साथ आएगी जिस तरह से एक नेटिव पर्सन चाइनीज़ लैंग्वेज बोलता है। लेकिन क्या वजह है कि क्लास 1 से मैट्रिक और मैट्रिक से कॉलेज, कॉलेज से हम यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंच जाते हैं लेकिन हमें इंग्लिश बोलना नहीं आते। वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू लर्न इंग्लिश। व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स टू लर्न इंग्लिश? There are 4 or 5 main components of English. But reading component is a kind of a component which stands like a king. And the rest of the modules play supportive role on it. Yes. If you read, you will improve your grammar, your vocabulary, listening, writing skills, speaking power, confidence, and of course information what you read. Definitely about regarding any topic. And let me continue with that. Yeah. When we read, we understand. When we understand, we visualize. When we visualize, it doubly strikes, in our memory. And therefore, it exactly fits into our hard disk. And if you keep reading out of your activities, I'm sorry to say that your dreams of learning English language well, and of course attract others with your linguistic ability, will remain dreams, and you will not be able to translate your objectives into accomplishment. And I figure out that many of our viewers are not going to get convinced with that. Why? Because it requires hard labor, in the right direction. And this is not a job of every person. Those who do not want to come out of their comfort zone and who want to remain in their sanctuary, they suffer. Now, let me sum it up. In a small phrase, we reap what we sow. Yes, definitely. The readings are quite important. अगर आपकी रीडिंग अच्छी है, अगर आप अखबार पढ़ें, मैगज़ीन पढ़ें या कोई ऐसी किताब जो कि बड़े सक्सेसफुल स्टोरी के साथ है, अगर आप उसको पढ़ते हैं तो आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ आ जाते हैं। और वही जैसे सर ने कहा कि वही आप आइडियाज़ को विजुलाइज करेंगे तो अगर उनको आप फॉलो करेंगे तो अल्टीमेटली फिर आपके अंदर भी एक ऐसी उमंग पैदा होगी कि मैं भी ऐसा ही काम करूं। लेकिन रीडिंग हैबिट हमारे पास क्यों नहीं है? क्या वजह है कि हम पढ़ना ही नहीं चाहते? एज आई डिस्कस मैनी टाइम्स कि वी हैव लाइब्रेरीज इन आवर एरिया। उन लाइब्रेरीज में बुक्स भी हैं, सब कुछ मौजूद है, लेकिन पढ़ने वाले नहीं हैं।
जैसे सर ने कहा कि रीडिंग द मेन पिलर, उसके जो सपोर्टिंग पिलर्स हैं वो राइटिंग स्किल्स एंड लिस्टिंग से मोर इम्पोर्टेंट है, वो उसका नंबर बाद में आएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी हैबिचुअल टू रीड एनी बुक, एनी न्यूज़पेपर और एनी मैगजीन. ड्यूरिंग डिस्कशन मैंने सर जफर से एक सवाल किया था, इम्पोर्टेंस ऑफ टेंसेस. व्हेन अ पर्सन हु हैज टेकन एडमिशन इन इंग्लिश लैंग्वेज क्लास एंड ही वांट्स टू लर्न इंग्लिश एंड वांट्स टू स्पीक फ्लुएंटली, तो उसको बचपन से एक बात बता दी गई कि जिसको भी टेंसेस आते हैं तो उसको समझ लें इंग्लिश आ गई. सर जफर हैज़ ऑलरेडी गिवन विद द डिटेल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. लेकिन एक सवाल वो ये है जो मेरी तरफ से है, वो ये है कि एक्टिव टेंसेस एंड पैसिव टेंसेस, एक्टिव और पैसिव की इंपॉर्टेंस क्या है, या दूसरे लफ्ज़ों में सिंपल आसान करूँ इस वाली बात को तो मैं ये कह सकता हूँ कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ पैसिव वॉइस टेंसेस. Well, voices are pretty important in English. If you do not learn voices, your English will, stand only on with one leg, Okay. and that will limp around. It was amazing that you will not be able to move. Of course, how can we? Is it possible? Yes, with one leg. Yes, it's not possible. And our newspapers, novels, articles, editorials, addresses, business letters, reports, speeches are flooded with voices. You can prove it yourself. Like if you choose a small news from English newspaper at your will and try to count the number of voices in that small news, Yes. and you will conclude yourself about its importance. But I have seen many graduates and undergraduates use passive voice instead of active voice and active voice instead of passive voice. That's And true. in doing so, they turn murderer into murdered, Murdered. friend into enemy, shopkeeper into customer, doctor into patient, Yes. loser into winner. Winner, yeah. And this is just like as different as chalk and cheese. And they mess up the whole thing. And what I conclude is our students are not taught voices and tenses. They are basically taught conversion. Convert, translation. Yeah. Of the If you situational look convert. at the papers of different classes, you will find a question in grammar section which says to change Change the voice. simple present into simple past, Ah. simple past into present perfect into past perfect, and when we get down to sentences, the same goes. We are asked to convert interrogative sentence to negative, assertive to interrogative sentence, and the story is not different when we come down to voices. So we are also asked to turn voices into active voice and vice versa. So I think that we cannot hold responsible to our students. There is something wrong in our system. Our system is designed for rote learning, not for concepts. This is true. When a person who is learning English, so first of all he learns active tenses. लेकिन if हम जिसको देखते हैं कि हर आदमी दूसरे को इंस्पायर करना चाहता है, and if you are able to speak English and speaking passive English, this is simply, I could say, the add ice to cake, and you are leaving a good taste in others' mouth when you are speaking the passive English. If you want to inspire the people, if you want to inspire others, speak passive English. और जब आपको पैसिव इंग्लिश बोलना आती है तो समझ लीजिए कि आपको वर्ब भी समझ में आता है कि व्हाट इज़ ट्रांजिटिव और व्हाट इज़ इंट्रांजिटिव वर्ब. आपको सब्जेक्ट भी समझ में आ जाता है, आपको ऑब्जेक्ट भी समझ में आ जाता है.
और आपको इम्पोर्टेंस भी समझ में आती है कि इस सेंटेंस में मेरा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है। लिहाजा यू मस्ट गेट कमांड ऑन पैसिव इंग्लिश। आफ्टर द लॉन्ग डिस्कशन आई हैव अ सिंपल क्वेश्चंस टू सर जफर कि आखिर इंग्लिश कैसे सीखें। इंग्लिश सीखने के लिए एक तालिब इल्म को क्या करना होगा? Well, I have already answered this in detail in our first video of the same series. Yes. So those who are interested, in learning how to, build, our speaking power, go get it. But here, I'm not going to let you go with empty-handed. Yeah. I would answer you with one of the couplets. Yes. ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और तैर के जाना है। ग्रेट। ये वो काम कर रहे हैं सर जफर जो ड्यूरिंग टीचिंग या लेक्चर में करता था, और जो कहा सर ने कपलेट कहा उसी के तनाजुर में ये है कि चले तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता।